वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अभी जो पिछले दो वीडियोस में पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि बायनॉमियल थ्योरम होती क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। देयर इज वन मोर एप्लीकेशन, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 101 रेज़्ड टू पावर 4। सपोज आपको इसका वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ बायनॉमियल थ्योरम, वी कैन कैलकुलेट दिस 101 रेज़्ड टू पावर 4 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 4। इसके बाद आप बायनॉमियल यूज कर सकते हो बेटा। बायनॉमियल में क्या लिखोगे आप, ये n क्या है, यहाँ पे n इज 4 एंड दिस 101 जो मैंने लिखा, दिस 101 कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू टर्म्स, दैट इज 100 प्लस 1, 100 प्लस 1। अब a के बदले क्या है, फर्स्ट टर्म है 100, सेकंड टर्म इज 1, सो दिस 100 प्लस 1 इज नाउ ए बायनॉमियल। और एक्सपोनेंट क्या है इसका, ये जो इसका एक्सपोनेंट है, इसका एक्सपोनेंट 4 है और दिस 4 से 0। Now this binomial theorem, we know that binomial is basically a plus b raised to power n. Now this binomial can be written as a plus b raised to power n. Here 100 plus 1 raised to power 4. So it is 4c0 100 raised to power 4 into 1 raised to power 0 plus 4c1 100 raised to power 3 into 1 raised to power 1 plus 4c2 100 square 1 raised to power 2 plus 4c3 100 raised to power 1 into 1 cube plus 4c4 100 raised to power 0 into 1 raised to power 4। अब ये जो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c, they are called binomial coefficients and this can be calculated with the help of Pascal's triangle। जो आपको पता है Pascal triangle होता है क्या है, it was a French mathematician Blaise Pascal who developed a triangle structure, who developed a structure like triangle, and with the help of this Pascal's triangle we can calculate the binomial coefficients। अब ये जो अगर आप Pascal's triangle पे जाओगे बेटा तो आप देखोगे whenever the binomial has degree 4, इसके जो binomial coefficients होंगे that is 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। So you can write 1 into 100 raised to power 4, it is equal to 1 and 8 zeros, 1 and 8 zeros into 1 raised to power 0, that is equal to 1 plus 4c1 4c1 is 4, that is 4 into 100 cube, that is 100 cube means 1 and 6 zeros, 1 and 6 zeros and 1 raised to power 1, that is equal to 1 plus 4c2। ये जो 4c2 है, this 4c2 is 6 plus 6 into 100 square, that is 1 and 4 zeros into 1 square, that is equal to 1 plus 4c3 is again 1 4c3 is equal to 4, so you can write it as it is 4 into 100 into 1 cube, that is equal to 1 plus 4c4 is here 1 and 100 raised to power 0, that is 1 into 1 raised to power 4, that is equal to 1। अब इन टर्म्स को कैलकुलेट करके, इनको ऐड करके you can find the value of this 101 raised to power 4, 101 raised to power 4। So this is the application of binomial theorem, and there is one more question in your textbook, and that is, suppose you have to find the value of 96 raised to power 3, 96 raised to power 3। with the help of binomial you can calculate the value of this। कैसे करोगे बेटा आप, जो 96 है, this can be written as 100 minus 4 raised to power 3। अब binomial यूज होगा, which also this 100 minus 4 can be written as 100 plus minus 4 raised to power 3, sorry, whole cube, that is 3c0 100 raised to power 3 to minus 4 raised to power 0 plus 3c1 100 raised to power 2 into minus 4 raised to power 1 plus 3c2 100 raised to power 1 into minus 4 square plus 3c3 100 raised to power 0 into minus 4 raised to power 3। इसको कैलकुलेट करके 3c0 3c1 3c2 3c3, they are called binomial coefficients, and this can be calculated with the help of Python, this either by this NCR is equal to n factorial divided by n minus r whole factorial into r factorial, or you can calculate
this by Pascal's triangle, and we know that this 3c0 is 1, 3c3 is also equal to 1, 3c1 3 hai and 3c2 bhi 3 hai. So you can find 1 into 100 raised to power 3, that is 1 and 6 zeros, minus 4 raised to power 0 is 1, plus 3c1, that is 3, 10, that is 10,000, 100 square, that is 10,000, 1 and 4 zeros, into minus 4 plus 3c3, that is 3 into 100 into minus 4 square, that is 16, plus 3c3, that is 1 into 100 raised to power 0, that is equal to 1, and minus 4 cube, that is minus 64. अब इनको सम डिफरेंस करके you can find the value of this. अब बेटा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि क्या बायनॉमियल थ्योरम से हम इतना ही कुछ कर सकते हैं. बेटा आपके पास अगर कोई एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट में, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन चेक विच टर्म इज लार्जर एंड विच टर्म इज स्मॉलर विद द हेल्प ऑफ बायनॉमियल थ्योरम. कैसे? सपोज यू हैव टू चेक विच नंबर इज लार्जर. 1.1 raised to power 10,000, 1.1 raised to power 10,000 or 1,000 or 1,000 or 1,000. 1.1 raised to power 10,000 or 1,000. You have to check which term is larger, whether 1.1 raised to power 10,000 is larger or 1,000 is larger. So you can write this 1.1 can be written as it is 1 plus 0.1 raised to power 10,000. 10,000. अब ये जो 0.1 है, this can be written as 1 by 10. This can be written as 1 by 10. So this 1 plus 0.1 can be written as 1 plus 1 by 10 raised to power 10,000. Raised to power 10,000. अब इस पे हम बायनॉमियल थ्योरम यूज करेंगे बेटा. तो a क्या है यहाँ पे? 1 है. b क्या है? 1 by 10. So 1 plus 1 by 10 is now a binomial here. And this 10,000 is n. It is the exponent. It is the index of this binomial. So we can use this binomial theorem by, we can write 10,000 c0 1 raised to power 10,000 into 1 by 10 raised to power 0 plus 10,000 c1 1 raised to power 10,000 minus 1, that is 9,000, that is 9,999 into 1 by 10 raised to power 1 plus so on. अब बेटा आप सोचते होंगे इसमें 10,001 टर्म्स होंगे. इस बायनॉमियल की जो एक्सपेंशन जो सीरीज होगी इसमें कितनी टर्म्स होंगे? इसमें 10,001 टर्म्स होंगे इसमें. तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 ही टर्म्स लिखेंगे. पहले हम देखेंगे इन 2 टर्म्स का सम कितना आएगा. ये जो 10,000 C0 है ना, इट इज इक्वल टू 1 and 1 raised to power 10th, 1 raised to power any number, 1 raised to power any number, it is always equal to 1 plus 1 by 10 raised to power 0, any number raised to power 0 is equal to 1, it is equal to 1 plus ये जो 10,000 C है, 10,000 C is equal to 10,000 into 1 raised to power 9,999 is also equal to 1 into 1 by 10 into 1 by 10. 1 into 1 into 1 it is 1 plus 10,000 into 1 by 10. एक कैंसल यहाँ से 1 plus 1,000 plus so on. और भी बहुत सारी टर्म्स है इसमें अभी 9,909 टर्म्स so on में है. बहुत सारी टर्म्स है इसमें plus 1,000 plus so on. बहुत सारी टर्म्स है. अब इन 2 टर्म्स का सम कितना आएगा बेटा? 1,000 10,001 इन 2 टर्म्स का जो सम आएगा दैट इज इट इज 1,001.
अब इस एक्स जो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने निकाली 1.1 रेज्ड पावर 10,000 की जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने निकाली उसका जो सम आया दैट इज 1001. It is a sum of only two terms and here it is one more term is just 1000. So which number is larger? So clearly we can say we can write 1.1 raised power 10,000 is greater than 1000. तो बेटा ये कुछ एप्लीकेशन थी बाइनोमियल थ्योरम की. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ उसमें आप इंशाल्लाह जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालेंगे. व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन. तब तक के लिए इंशाल्लाह आप खैरियत से रहेंगे, अच्छे से आप इस पर कंसंट्रेट कीजिए. थैंक यू वेरी मच.